Welcome students. Welcome to the lecture number 7 of chapter Conditional and Looping Constructs. In the previous lecture we have learned about the loops concept and we came to know that the concept of loop is basically used in those situations where we have to repeat a particular set of statements more than once but continuously. Okay, so this is basically the definition of the loop, that loops are used to repeat particular set of statements more than once but continuously. Okay, and I told you in the previous lecture that loops are basically divided into two types. The first category is basically the for loop and the second one is the while loop. So we will begin with the for loop, right? So now first of all we are going to see that what is basically the syntax of for loop, यानी कि जब हम for loop लिखेंगे तो उसको लिखने का क्या वे है, क्या तरीका है. It means what is the syntax for writing the for loop. First we are going to see it now. So the topic given over here is traversal using all the three ways. Okay, you know, in for loop we can run the for loop in three ways. So let me explain you the syntax of the for loop, right? Yes, so the syntax of the for loop is that first you have to write the word for, okay, then you have to take a loop variable. You can take any variable a, b, c, x, y, any variable name as per your choice. So for, then you have to write the variable name. After that you have to write in, and after that either you will write about the particular string or a list of values or a range, and you can specify any one of these. इन तीनों में से कोई सा भी एक आपने ऑप्शन चूज करना है, and at the end आपने क्या लगा देना है, this colon. Okay, so what is the writing way of for loop is that first you have to write the for, then variable का नाम, then आपको एक कीवर्ड लगाना है that is called as in, right? और in के बाद या तो आप कोई स्ट्रिंग मेंशन करेंगे और या आप कोई लिस्ट मेंशन करेंगे या आप एक रेंज फंक्शन होता है हमारा, उसको आप यूटिलाइज करेंगे. एंड आफ्टर दैट जब आपने इन तीनों में से कोई एक चीज दे दी, देन यू विल सिंपली पुट टू कोलन. अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि देर आर स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2. ओके, और एज यू नो दैट जैसे इफ एल्स वाले में भी हम इफ के अंडर जो स्टेटमेंट्स करवानी होती थी वो हम इफ के नीचे लिखते थे और थोड़ा गैप दे के लिखते थे. Similarly is the case with the for loop. Whatever statements you want to do with the for loop, आपको उसको for loop के नीचे लिखना है and you have to give a particular space after that. Okay, वैसे तो जब आप यहाँ पे कोलन लिखकर जैसे एंटर मारेंगे the cursor will automatically अपने आप ही नेक्स्ट लाइन पे आएगा और एक पर्टिकुलर गैप के बाद अपने आप ही रुकेगा. ठीक है, तो आपको you have to write those statements from their side. अच्छा, यहाँ पे for loop के साथ इतना ही काम है, लेकिन यहाँ पे एक ना आपको else भी दे रखा है. इट इज ऑप्शनल, अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो आप लगा दें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं हो तो आप छोड़ भी सकते हैं उसको. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फॉर लूप, कि सपोज हमें पता है हमारा फॉर लूप जो है एक पर्टिकुलर टास्क को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करता है. ठीक है, सपोज हमने कुछ ऐसा सेटिंग करी कि हमने एक टास्क फॉर लूप के अंदर सेट किया और हमने कुछ ऐसा सेट कर दिया कि दैट टास्क मस्ट रन 4 टाइम्स. ओके, सो नाउ the code run first time, second time, third time, fourth time, and after completion of the fourth time अब क्या हो, तो else part में क्या होता है कि when the loop stop working then the else part will be performed. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नंबर 3 का यूटिलाइजेशन क्या है कि जैसे ही हमारे ये फॉर लूप खत्म होगा हर बार एग्जीक्यूट होने से, देन ये else वाली स्टेटमेंट पे कंट्रोल जाएगा. ठीक है जी, तो होता कुछ है सिंपल, जब फॉर लूप चलेगा तो पहले जैसे फॉर लूप के अंदर कंट्रोल आएगा, पहले स्टेटमेंट नंबर 1 करेगा, 2 करेगा, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 1, 2 को करने के बाद ये वापस स्टार्टिंग में पहुंच जाता है. ठीक है, क्योंकि लूप है ना, तो इसने तो बार बार काम को रिपीट करना है ना.
तो ये जस्ट अभी एक सिंटैक्स है. अभी हम सिंटैक्स में जो डिफरेंट ऑप्शंस है लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट एंड रेंज, इनको समझेंगे कि हाउ दीज ऑप्शंस कैन बी यूज्ड. ठीक है. सो इट इज जस्ट अ रफ लेआउट ऑफ कि भी फॉर लूप आप कैसे लिखेंगे. जस्ट रिमेंबर दैट फर्स्ट यू हैव टू राइट द फॉर वर्ड, then a particular variable, or you can say a loop variable, then in, and after in either you use a string or a list or a range function. Okay, तो चलिए अब इन तीनों तरीके के वेज को हम वन बाय वन इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है. फर्स्ट वे इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग. सपोज मैंने ऐसे लिखा हुआ है फॉर ch, दिस इज द फॉर लूप लिखना था. देन सपोज ch इज बेसिकली द लूप वेरिएबल. हाँ, सिंटेक्स में आपने देखा था कि वो वेरिएबल को मैंने एंगल ब्रैकेट में लिखा था. बट यू नो, वेन एवर वी राइट एनीथिंग इन एंगल ब्रैकेट इन द सिंटेक्स, इट मीन्स दैट दैट पर्टिकुलर वैल्यू कैन चेंज. अगर आप यहां पे देखें वापस, सो फॉर विल एज इट इज लिखा जाएगा, इन भी एज इट इज लिखा जाएगा, बट वेरिएबल नेम इज रिटन इन द एंगल ब्रैकेट्स ना, सो दैट वेरिएबल नेम इज एनीथिंग. ओके, सो फॉर और इन तो लिखना कंपल्सरी है, बट वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है. सो फॉर ch is the variable name, then in, and after that I have written a string. ठीक है, मैंने डबल कोट्स के अंदर आशीष वर्ड लिख दिया, so that is basically a string. So now अब मैं जानना चाहता हूं कि how this loop will work. Okay, so अब इसकी वर्किंग मैं आपको समझा देता हूं. जैसे ही काम करते करते हमारा कंट्रोल इस फॉर लूप में पहुंचेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो ch नाम का वेरिएबल है, इस ch नाम के वेरिएबल के अंदर इस स्ट्रिंग में से एक वैल्यू असाइन होगी. तो सपोज इस ch नाम के वेरिएबल के अंदर सबसे पहले जो डेटा क्या दे रखा है, a, ये a असाइन हो गया. ठीक है, उसके बाद ये अंदर आया. इसमें यहां अंदर आते ही प्रिंट स्टेटमेंट दे रखी थी, और प्रिंट स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, भाई ch की वैल्यू को प्रिंट करो. सो ch की वैल्यू हमारी क्या थी, a, वो प्रिंट हो जाएगी. और यहां लिखा है एंड इक्वल टू डॉलर, तो इसका मतलब एंड में इसके डॉलर लगना है. चलो जी, ये डॉलर भी सिंबल हमने यहां पे लगा दिया. अच्छा, अब इस लाइन को प्रिंट करने के बाद क्या होगा, कंट्रोल अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस फॉर लूप के अंदर मैंने जस्ट एक सिंगल स्टेटमेंट दे रखी है ना. सो द कंट्रोल विल नॉट मूव फॉरवर्ड. इन स्पाइट ऑफ दैट अब कंट्रोल वापस ऊपर फॉर लूप में चला जाएगा, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि भैया फॉर लूप जो है वो काम को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए होता है. सो दैट्स वाई इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद कंट्रोल विल नॉट मूव फॉरवर्ड, इन स्पाइट इट मूव्स बैक टू द स्टार्टिंग ऑफ द लूप. नाउ जब ये दोबारा से लूप पे आ गया, तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे हमने ch के अंदर a वैल्यू तो असाइन कर चुके हैं ना इसकी. नाउ अब क्या होगा, अब ch के अंदर अब जो नेक्स्ट वैल्यू है अब वो असाइन होगी. तो सो द नेक्स्ट वैल्यू इज बेसिकली s. ठीक है जी, तो ch के अंदर एक और वैल्यू मिल गई. नाउ अगेन आफ्टर दैट ch कम्स डाउन and perform this statement. Now it will print the current value of the ch. Right now the current value of ch is basically s. Okay, and at the end of it we have to print the dollar symbol. So अब इसके बाद भी यहाँ पे dollar symbol आ जाएगा. Okay, now once this print statement is completed, again it moves to the starting of the loop. Okay, so now s is assigned in ch already. Now when it moves further, then ch will get the value of the next character of the string, that is basically the h. Okay, so ch will get the value as h. Now again it's come down, print the value of ch, that is it will print the value of ch as h, and then after that the dollar sign will be printed. Okay, and after completion of it, again control moves to the starting of the loop, then the h is assigned over it. Now the ch will get the value as next value, that is I. Okay, so again ch comes down, print the value of ch as I, then dollar. Again after completion of this loop, control moves up. So now till I data is assigned to ch. Now then ch will get the value as s. Okay, and then again it comes down, it print the value as s, then the symbol of dollar.
After that it again moves up. Now the ch will get the value as h. Okay, then again it's comes down. Okay, and now h is also assigned, so after assigning it, it comes down. It will print the value of ch as h, and then it will print the dollar symbol. Okay, now after printing it, it again moves up. Now when it moves up, in that case ch will get no value. ठीक है, ch में कोई वैल्यू नहीं आएगी, बिकॉज ऑल द कैरेक्टर्स जो होते हैं उस स्ट्रिंग के अंदर हमने वन बाय वन ch के अंदर साइन करके दे दिए ना. सो ये लूप कब तक चलता रहेगा? जब तक जो हमारी गिवन स्ट्रिंग है उस गिवन स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर वन बाय वन ch वेरिएबल के अंदर असाइन नहीं हो जाता. एंड वंस ऑल कैरेक्टर्स आर असाइंड टू द ch वेरिएबल, देन at last when there is no variable left for no character left for the ch variable, then the loop stops performing and the control comes out of this loop. Okay, so this will be the output of yours, right? So you can see that it is the same output as we have discussed, that is a dollar, s dollar, h dollar, I dollar, s dollar, and then h dollar. Okay, so remember one thing, when you use a string in the for loop, then what will happen? The system will assign each character of the string one by one to the variable and do the work. Okay, and this procedure continues till all the characters are assigned to the given variable, and when no character is left for assignment, then the loop stops working. So this is the first way of doing the loop. Now let's come to the next thing, that is a list. List is basically a chapter, complete chapter with us. Okay, जो हम आगे पढ़ेंगे, but just for a small introduction मैं आपको बता देता हूँ. List basically क्या है? It's a collection of elements. ठीक है, and we put all those elements in a square brackets. बस अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए. So in fact suppose मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, मैं उस डेटा को भी फॉर लूप में यूज कर सकता हूं. सपोज मैंने लाइक दिस लिखा, सो सेम सिंटेक्स फॉर. नाउ एट दिस टाइम x इज बेसिकली द लूप वेरिएबल in and in within the, and after that I have printed this list. Okay, you can see that within the square brackets I have put some numbers over here, and then last colon, and then print x and end is equal to hash. So obviously when this loop run, we will get this output. Okay, so I will just explain you the output once again. When the control comes to this for loop, so first of all x के अंदर वैल्यू जाएगी, that is 3. Okay, so the first value of the list is assigned to the variable x, then it will print the value of x, that is 3, or at the end it will print the hash symbol. So this data is printed. After this, the control again moves to the starting of the loop, then it assigned the next value present in the loop to the variable x, that is now it assigned the value 5 to the variable. Okay, and after assigning it again comes down and it will print the value of x with the hash, so 5 hash. After that again the control moves to the beginning of the loop, then the x will get the value as 8. Okay, और जब वो अंदर आएगा, then it again print the value of x, that is 8 and hash. After that it again moves to the starting of the loop, then x will get the value as 9. Okay, so 9 value get assigned to x variable, so it will print the value of x, that is 9 and hash. Okay, and after that it again moves to the loop. Now after that the x will get no value, so no value is there in x, left for x. So as soon as the list is complete, the loop stops executing. Okay, so this is a way in which we can use a loop. Now there is one more last way, that is by using range. Okay, so range is basically a function for us. So the main thing about the range is basically, let me show you with the help of an example that how this range function first works, and then we will use it in the loop. So for that I will open my Python interface. Okay,
first I will explain you about it, and then I will show you how it will run. Now suppose if I have written like this, L is equal to list, okay, and after that if I written L is equal to range, suppose I have written 1 comma 5. So what will happen in that case? The L will get the values 1 2 3 4. Okay, so you can see that the range function क्या करता है हमारे लिए, that it will generate a list of numbers which begins with the starting value that is 1, तो 1 से start है, but जो भी इसकी last value दे रखी है उससे एक कम तक चलेगा. So that's why you can see that it ends with the value 4. Okay, so range function is basically used to do this kind of work. And suppose if I write like list, okay, and L is equal to range, suppose if I have written like 1 comma 5 comma 2, okay, so what will happen in this case? Obviously a list will be generated that begins with A, but the next element will be obtained by adding 2 to the previous value. Suppose if I add 2 to 1, I will get the value as 3. And if I add 2 to 3, then I will get the value of 5. But I can't go write the 5 because you know the elements present in the list must be 1 less than the last element. So ये 1 और 3 आएगा because it starts with the 1, ठीक है, ends होगा 5 पे, यानी 5 से एक कम पे, यानी maximum 1 से 4 तक नंबर प्रिंट हो सकते हैं. But over here we have given a step value that is 2. So जो भी numbers print हो रहे हैं they are printed on the interval of on the base of the interval of 2. ठीक है. So 1 से start है, 5 से एक खत्म पे पहले एक खत्म होगी, but 1 से आगे तक बढ़ने के लिए वो +2 करता रहेगा. But over here I haven't mentioned the third item. So it means ये by default value कितनी increase करेगा? Just 1, right? सो रेंज फंक्शन इस तरह से हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स प्रिंट कर प्रोवाइड कर देता है विच बिगिंस विद द स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंड्स विद द 1 वैल्यू लेस देन द लास्ट वैल्यू. ओके, सो इन केस अगर आप पाइथन में इसको चेक भी करना चाहो तो यू हैव टू राइट लाइक दिस, ओके, दैट L is equal to list, then L is equal to range, and then when you print the value of L you will get this list, right? So let's come to our presentation by using range. So over here I have written an example like for A in range 1 comma 9 comma 2, and then print A and end is equal to A. Okay, let me give you few minutes कि आप एक बार पहले जरा इसको खुद अपने आप ट्राई कीजिए एंड सी कि क्या आउटपुट इसमें आ रहा है, ठीक है, देन आई विल एक्सप्लेन यू, राइट? सो अब मैं आपको ये बताता हूं कि कैसे इसमें ये लूप का एग्जीक्यूशन हो रहा है. फर्स्ट क्या होगा कि ये रेंज वाला फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा एंड इट विल गिव अस सम वैल्यू. सो इस रेंज वाले फंक्शन से ने हमें रिजल्ट में एक लिस्ट पकड़ा दी विच बिगिंस विद 1 और 2 का गैप चलेगा, ठीक है. सो द नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 3 एंड 3 + 2 विल बी 5, 5 + 2 विल बी 7, बट 7 + 2 is 9. लेकिन हमें पता है 9 तो से एक कम तक चलना है ना, सो वी कांट टेक 9. सो इट मीन्स दिस लिस्ट एंड्स ओवर हियर ऑल्सो, ठीक है. सो रेंज फंक्शन हमें ये लिस्ट प्रोवाइड कर दी. सो एज सुन एज दिस लूप रन्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ A विल बी 1. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विल बी असाइंड टू A. So 1 is assigned to A, and then the control moves down, okay, and now here is the output. So first the current value of A, that is 1, and @ symbol is printed, so you will get this output. Then again control moves to the starting. Now second time the next value of the list is assigned to A, so the A will get the value as 3, right? And then it comes down and print the value of A, that is 3, and @ symbol. After that it again moves up
Now the next element of the list, that is 5, is assigned to A. So now the A will get the value as 5. Then it again comes down, it prints the 5 and @ symbol. Now after that the control again moves up. Now the last element that is available in the list is 7. So now the value of 7 is assigned to this variable A. So A will get the value 7, right? Again it comes down, it will print 7 and @ symbol. Now after that the control moves up, but at this time there is no value available in the list for A. So it means when there is no value available in the list for A, then this loop stops executing. Okay, so in this way your for loop can be managed in 3 ways, right? So today I have explained you about all the 3 mechanisms or all the 3 ways in which a for loop can be implemented, right? So that's all for basically today's class. In the next class we are going to learn some questions. We are going to basically perform some questions in which I am going to use for loop, right? So you just practice all these things in your Python program. What you have to do, you just simply open a file and just write this for loop, okay, this one, okay, and after writing this for loop just run the program and you will see that you will get the same output as it is given over here. Okay, so what is your task? You have to run each loop in a file and then see what will be the output. Okay, so thank you very much and have a nice day.